Okay, moving ahead to our next one. What did you guys read? Penis. Moving ahead with the anatomy of poster, we have already discussed a lot of part, but let's break down certain anatomy of posters for those who are already made posters who are wanting to make one. We'll just categorize a few things कि ये चीज़ें हमने देखे, हमने ऑब्जर्व किए. You guys can keep into consideration. You guys can follow these things. So yeah, let's go ahead. First thing is the title slide. लेफ्ट वाले पोस्टर में what all do you guys see first and what comes later? What does your eyes get drawn attention towards first? The car. The car. Okay. Next. I'd see the title of the movie first because my eyes go first over there to Baby Driver. Yeah. Okay. And Yeah, I also see the title. टाइटल या बिकॉज वो टाइटल वाइट में है, एकदम क्लियर कितना स्मॉल है. यस इट इज. आई एम नॉट सेइंग कि 100% ऑफ द टाइम तुम्हारा सब टाइटल पे ध्यान जाएगा. प्रॉबली 70% ऑफ 70 to 80% ऑफ द टाइम टाइटल पे ध्यान जाएगा, विच इज सफिशिएंट. 100% कुछ लोगों का कार पे ध्यान जाएगा, मेरा शायद सबसे पहले फेस पे ध्यान गया, तो मेन कैरेक्टर के फेस पे ध्यान गया. तो इट इज टू ईच एंड एवरीवन इट्स देयर ओन चॉइस. बट अगर 70% लोगों का ध्यान वो बेबी ड्राइवर जो नीचे नाम है मूवी का उस पे गया है, तो देन दैट पोस्टर इज वर्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर. So that is one title slide, something that has to be kept into consideration. Again, how the smart design, that is the way it is made, a control and the person holding it on his shoulder is kind of creating that. So control, again text इतना ही है, बट वो तुम्हें subliminally मैसेज तुमको दे रहा है कि that control is your hand. तो somehow I think तुम्हारा टेक्स्ट, तुम्हारा टाइटल स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल वर्किंग ऑन अ पोस्टर. अभी द सेकंड इज द विजुअल हायरार्की. लेफ्ट साइड के पोस्टर के बारे में तुम्हारा क्या थॉट्स है? व्हाट डिड यू सी फर्स्ट? द ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर के बारे में क्या थॉट्स है एंड व्हाट डिड यू गाइस सी? Wherever the rectangle is, you automatically focus to it because first of all, it's in focus. Yeah. That's all. Yeah. परफेक्ट. उतना ही था वो इमेज लिया है, बट योर आईज डजंट गो टुवर्ड उसका ईयर और उसका हेयर और उसका. यू सी हिज आईज, यू सी व्हाटएवर पार्ट दैट इज फोकस. तो हमको वो बहुत ही कॉन्शियसली फोकल पॉइंट क्रिएट किया गया है इन दैट थिंग, बिकॉज मेरा अटेंशन उसकी तरफ जाना चाहिए. तुमको फिर भी पता है ह्यूमन है, बट हम तुम्हारा अटेंशन उसके आईज के पास है. सो वो फोकल पॉइंट तुम वैसे क्रिएट कर सकते हो, thus moving your user attention towards that. Then the second is the flow of attention. The right side image, if you see, what is the first thing that you guys observe? The title saying coffee to go. कितने लोगों ने ये सबसे पहले देखा? 1 2 3 any street any city. किसी ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया? नहीं. यस या बिकॉज वो अटेंशन का फ्लो वहाँ पे है ही नहीं. वो हमारा रिक्वायरमेंट है, बट दैट इज नॉट द फर्स्ट थिंग दैट इज देयर. आवर फर्स्ट अटेंशन इज कि टू गो, हमको ये बताना है लोगों को, फिर लोग को जानने अच्छा टू गो क्या. तो उसके ऊपर सेकेंड इज द कॉफी विच इज अगेन अ लिटिल बिट स्मॉलर फॉन्ट, एंड देन टू सपोर्ट इट वी हैव दैट illustration of people carrying a coffee pot. So thus the flow of attention in a poster will also be a key thing while maintaining the visual hierarchy, I feel. Fonts, I think fonts are like, if you use it correctly, it works wonders. Left वाला जो image है, poster है, it's for those who have not seen this film, it's called Black Swan. What do you guys think about the poster? The corner of the S is making the swan shape, the head. या वो कितना कॉन्शियसली ये किया गया है कि स्वान का शेप
वो एस के इससे आए. Again, Swan का like lettering starts with S, so it is helping that plus उसमें वो डाला गया. So how a typography is used in creating like a creative font, like one of the text, how it looks and highlights. तो वो चीज़ है. Again, the second side, hello Hyderabad, your departure, you got a whole lot sweeter. Tim Horton. Where do you think is this coffee, this cafe placed? The airport. Why? Because of the planes. Yeah, planes का ये रखा है. वो किधर भी मेंशन किया नहीं है एयरपोर्ट के. Hello Hyderabad लिखा है, मतलब probably when you are entering Hyderabad, it's not in the middle. You are entering Hyderabad, it's why it's written Hello Hyderabad. And again, your words like your departure and things like that, again the imagery that is helping, it is adding on to what we want to say. It's at the airport, new Tim Hortons at the airport. You don't have to mention over here also कि अच्छा we have put out a new Tim Hortons at the airport. So our text is doing the job. Color. So left wala image, the one with red and black, what is the thought about that? It's like it is caught in motion. Caught in motion. You like it? Not like Yeah, I like it. it? So very contrast, very sharp black और red का use है. Again text, high performance, high energy, उससे पता चल रहा है कि ये motion वगैरह में shoot किया गया है. हमको बस मोशन दिखाने का था, इसलिए हमने बहुत सारा कलर यूज किया नहीं. हमने 2 कलर पे फोकस किया और उसमें हमने वो मोशन सब कुछ. While on the right side, what do you think about that? It's giving a very soothing feeling. It's a बहुत calm, because it's very open. It's just like this one guy and this such a big thing, so it just automatically feels very soothing to the eyes, according to me. Calm, soothing. Does this look modern? Kind of vintage. Vintage, yeah. Kind of this aesthetic is not modern. I don't. Yeah. Yes, the aesthetic is also not modern. Also, if you observe the colors, the tones in his skin, the tones on the cloth, the tones in the garden, it's a little bit nostalgic in nature. तो वो भी वो एक कलर का पार्ट है. वो शॉट अभी के ये लुई विटॉन के लिए किया गया है, अभी के टाइम में ही किया गया है, बट दैट कलर टोन हैज क्रिएटेड दैट नॉस्टैल्जिक इफेक्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ वाइब एंड फील. The yellow color का this is given on it, yeah. Yeah. तो ये मूड क्रिएट करता है by doing that. Yeah. Okay, moving ahead to our next one. What did you guys read? Penis. Anyone else read anything else? There's very less space between pen and is, so it. Yeah. So our most important thing that I think we should have in consideration is the legibility. The text that is वो text वही लिखा है, this pen is black, but cause उसका spacing ठीक से हुआ नहीं है, उसका placement ठीक से हुआ नहीं है, so that whole message is coming out wrong. So then legibility, when you are making any poster, or these 4 things I think kept into consideration will be able to make a poster. Yeah. But I still say that this design is smart, because the moment someone reads penis, the person would read it again and like would be okay. This pen is black, so it's grabbing the attention twice for any person. Yes, but if it is consciously done, amazing. If it is not, then what? Like in your message, if you have just अभी अगर टेक्स्ट के हिसाब से एक राइटर ने, कंटेंट राइटर ने तुमको टेक्स्ट दे दिया कि भाई हमको टेक्स्ट डालना है, द पेन इज ब्लैक, हमको ये टेक्स्ट डालना है. अभी डिजाइनर को समझा नहीं, एक डिजाइनर ने एक ही लाइन में लिख दिया दिस पेन इज ब्लैक, ऐसा लिख दिया. एक ने लिखा दिस पेन इज ब्लैक और एक ने ऐसा लिखा. So it is, if it is consciously done, yes, this particular poster, yes, it is consciously done. That is the reason I put it. That is the reason I wanted to talk about it. कि ये बहुत सोचा समझा हुआ किया गया. But बिना
सोचे समझे अगर किया गया तो देन क्या हो सकता है, that can be a case. So anytime that you are doing a poster, after making it, probably show to a couple of people, not only the people who are into it, but someone who is not even part of anything. Have them have a look at it. Probably they'll see a certain things which you guys are missing out on. So then that legibility might help. If वो consciously तुम वो करने जा रहे हो, nothing like that, it is hitting the bullseye. But अगर वो मतलब बिना सोचे समझे वो हो गया और डिजिटल पे जा रहा है, ठीक है, तुम स्टोरी पोस्ट तुम निकाल सकते हो. अगर वो प्रिंट हो गया तो फिर क्या करो? तो देन दिस इज ऑल समथिंग दैट आई थिंक हैव टू बी केप्ट इनटू कंसिडरेशन. So yeah, these are the few anatomies of poster I feel are very important to understand and utilize throughout the poster making process. अभी क्या लगता है ये पोस्टर किस चीज का? When I tried to focus on it, I think it's JBL, Okay. but ऐसा पहली बार But मैंने ये देखा है. उन लोगों के कारण शायद JBL है, बट क्या पोस्टर है, हाँ. क्या लगता है? Music gives you goosebumps or something. Because I have seen this. I think I've You have seen this seen already. this. Okay, you have seen this. That is well. Anyone else? Now, No, the picture is too small to actually understand anything. yeah. Okay. Now, Yes, it's better. now, Yeah. yeah. Now, It's clear now. yeah. It's clear. अभी ये पोस्टर जो है, can this poster go and on a billboard on a highway? Yes. Yes, we can. Okay. How many of you guys agree or disagree with this? Yes. Yeah. Why do you guys say it can go? Easy, quick to read. Messages being Yeah. communicated. एकदम क्लियर है, मैसेज क्लियर है. ये हमारा दूर से हम ये ऐसे दिखेंगे जब हमारा कार पास जाने लगेगा. एज आर कार और बाइक कम्स क्लोज, बस क्लियर है. टेक्स्ट एंड लोगो सफिशिएंट इनफ. आर बैकग्राउंड इमेज क्लियर इनफ टू टेल व्हाट यू वांट. दैट इज. Atharva just raised his hand. I think he wants to say something. या अथर्व. It was like it's easy to see because if this will go on a billboard and it's Yeah. just 3 words and it's like very easy to understand. या That was it. या तो ये बहुत स्पेसिफिक है कि ये बिलबोर्ड के लिए यहाँ पे वो यूज हो सकता है. बिकॉज हमारा कार पास होगा, इवन इफ यू गेट 1 or 2 सेकेंड, 3 वर्ड्स है टेक्स्ट और वो हमारा लोगो क्लियरली उधर मेंशन है और पीछे का इमेज इज जस्ट हेल्पिंग अस नो व्हाट इट इज. म्यूजिक फील्स बेटर. अभी वो म्यूजिक फील्स बेटर, ये वो टेक्स्ट हेल्प कर रहा है कि वो म्यूजिक उसको गूज बम्स आया है. गूज बम्स कहाँ से आया है पता नहीं है, ठंडी में खड़ा है इसके लिए आया है पता नहीं, मम्मी ने मारा इसके लिए आया है पता नहीं, बट वो टेक्स्ट म्यूजिक फील्स बेटर इज हेल्पिंग. तो दिस इज देयर. नाउ आर की टेक अवे. First is our posters. We spoke about a lot of posters and maximalism, minimalism. We spoke about movie posters. We spoke about music posters. So अलग अलग कल्चर में अलग अलग टाइप का कैटेगरी है. उस कल्चर में वो कैटेगरी मेजरली यूज हुआ जा रहा है, हो रहा है. Doesn't mean you cannot move fast and oscillate through that. You can use a vintage style in a music. You can use a movie style in a vintage. You can use a vintage style in a protest. So it is all on your like. There's no rule that you have to follow. It's just something that is followed in each culture. It's on your depends on you where you want to use it. Next, second is the style tells a story. Again, vintage, techno हमारा और ये था, उस वो स्टाइल हमको कुछ स्टोरीज बता रहा था. थर्ड इज ट्रेंड्स आर जस्ट अ टूल. मैक्सिमलिज्म हमने, मिनिमलिस्टिक, कोलाज हमने जस्ट बात किया. दीज आर जस्ट टूल्स बेस्ड ऑन वॉट एवर दैट इज करंटली रिक्वायर्ड टू तुम्हारे पर्सनल कंटेंट के लिए या तुम्हारे क्लाइंट के लिए. यू कैन जस्ट फॉलो दैट. यू डू नॉट हैव टू स्टिक टू अ ट्रेंड. कुछ लोगों ने, हम इन आर इनिशियल पोल, some people liked 1 and 2. One was vintage. That was something that was done in 30s or 40s. So
then it is like you can't say कि okay हमारा trending currently ये है हम यही follow करेंगे. अगर हम लोग के 10 लोग बैठे हैं 10 लोग में से हमारे 4 या 5 लोग बोल रहे हैं that they like one, that does mean that you can use it one, you just need to understand how to use it. And then anatomy of our poster. So we spoke about our colors, our text, where it goes, our flow of that poster, and that is that. Softwares that you could use. Many of you guys are studying design, have been using software, have not been using software. Some of these software that I would recommend, one is Canva. This is majorly free to use software. It's an online one. You can just sign up your Google and use it. Create a poster on that. You will have image, text, everything available over there. Other software is Instagram. The reason why I say Instagram is a lot of collage images you see are easily be able to do on Instagram. You can take that, go into a story, take an image, crop a certain part of it, paste it, crop another image, certain part of it, paste. So Instagram also helps you create a certain kind of poster, not very complex one. For complex one, you have to use some software like Photoshop, Adobe software that will help you with getting a lot more intricate details. And then there is another one, Procreate. For those of you guys who have Apple, who use Apple products, have an iPad or things like that, you can use Procreate because that software helps you do a lot of drawing.